हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐसे मेथड जो किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। ये टॉपिक हमारा क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में दिया गया है। क्लास 11th में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर में और क्लास 12th में सॉल्यूशन के चैप्टर में। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेन मेथड्स हैं जिनसे किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेथड्स तो भाई बहुत सारे हैं, पर जो मेन मेथड्स हैं ये है मोलैरिटी, नॉर्मलिटी एंड मोलैलिटी। तो तीन मेथड्स हैं, नाम आप सबने सुना होगा। बेसिक क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, बेसिक कंसेप्ट क्या है, आप सीखते हैं। तो पहला टर्म हमारा है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या है? इफ 1 मोल ऑफ एनी सॉल्यूट इज found dissolved in 1 liter of solution. Got it? What I have said? 1 mole of any solute is found dissolved in 1 liter of solution, then it represents the molarity of solution. Take what is normality? Normality क्या है? When one equivalent of any solute is found dissolved in 1 liter of solution, then it represents the normality of solution. One equivalent of solute, if found dissolved in 1 liter of solution, it represents the normality of solution. So what is the basic difference between molarity and normality? Here the 1 mole of solute has been taken, and here 1 equivalent of solute has been taken. So what is the difference between 1 mole and 1 equivalent? Look here, देखो there, number of moles, it is equal to weight of any substance upon molecular weight. But in case of number of equivalent, it is equal to weight of substance upon its equivalent weight. The basic difference lies in the fact that in case of number of mole, molecular weight has been considered. In case of equivalent weight has been considered. So there is the basic difference of molecular weight and equivalent weight in case of molarity and normality. What about molality? Molality is 1 mole of solute is found dissolved in 1 kg of solvent. So 1 mole of solute, if found dissolved in 1 kg of solvent, then it represents the molality of solution. So I think you can understand molality is completely different from the rest of these two topics. Why? Because in this case solvent has been considered, and in these two cases solution has been considered. I mean to say molarity, in case of molarity, solute has been compared with solution. Okay, in case of normality also solute has been compared with solution, but in case of molality solute has been compared with what? Solvent. So that's why molality is completely different from normality and molarity. तो आगे बढ़ते हैं, और क्या चीजें इनमें हम लोग पढ़ सकते हैं। डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया। अगली चीज क्या है? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ मोलारिटी? यूनिट ऑफ मोलारिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ग्राम मोल पर लीटर। वेदर यू राइट ग्राम और नॉट, सिंपल यू हैव टू राइट मोल पर लीटर ऑल्सो। दोनों यूनिट सेम है, आइदर यू से ग्राम मोल पर लीटर और मोल पर लीटर। यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, बिकॉज हियर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हैज बीन टेकन, तो यूनिट हो गई हमारी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मोलारिटी? द यूनिट ऑफ मोलारिटी विल बी ग्राम मोल पर केजी। Here the weight of solvent has been considered, so that's why the unit is gram mole per kg. So these are the basic criteria in which we can make a difference between molarity, normality and molality. Now consider one more thing, very much important thing for your examination. What effect of temperature on all these three concentration terms? What is the effect of temperature?
Now, in case of molarity and normality, since volume of solution has been considered, so that's why molarity is temperature dependent concentration term, as well as normality is also temperature dependent concentration term. Why? Because in these two cases volume has been considered and volume depends on temperature, but molarity is temperature independent concentration term. Why it is temperature independent concentration term? Because here weight has been considered and there is no effect of temperature on weight. So there is a question which has been asked in several competitions as well as board examination. What is the most effective method, most good method to represent the concentration of any solution? Which one is the best method to represent the concentration of solution? So no doubt that will be molarity. Molarity is the best concentration term to represent the concentration of any solution. Why? Because it is temperature independent unit and these two terms are dependent on temperature. तो कॉमन सेंस है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसी वजह से ये हमारा बेस्ट मेथड कहा जाएगा. तो ऐसे हम इन तीनों कंसंट्रेशन टर्म में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. ये तीनों बेसिक टर्म है क्या. आगे बढ़ते हैं. एक और चीज मैं यहाँ डिस्कस कराता हूँ, आपके बहुत काम में आएगा न्यूमेरिकल्स में. मोलारिटी का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम से किया जाता है, नॉर्मलिटी का रिप्रेजेंटेशन कैपिटल एम से करते हैं और मोलारिटी का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल एम से करते हैं. तो लुक हियर, इफ इन एनी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 5m glucose solution has been given. So what is the meaning of 5m glucose solution? This stands for 5 molar glucose solution and the meaning of this term is 5 moles of glucose are found dissolved in 1 liter of solution. So on this basis we can determine two numerical values, number of moles of solute जो यहाँ पर ग्लूकोज के रूप में दिया, that one is 5, and number of volume of solution, that one is 1 liter. Again, if in any numerical 5n glucose solution has been given, so what is the meaning of this term? It means that 5 equivalent of glucose is found dissolved in 1 liter of solution. Okay, बात समझ में आ रही है ना. तो इस न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से क्या जानकारी मिल रही है हमें? The number of equivalent of glucose or any type of solute is 5 and the volume of solution is 1 liter. Now, if in any question 5 is small and glucose solution has been given, so what is the meaning of this term? इसका मतलब क्या होगा? 5 moles of glucose are present in 1 kg of solvent, that is water. यहाँ पे दो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारी समझ में आ रही है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट वन इज 5 मोल एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट वन इज 1 kg. तो ये हमारे तीनों रिप्रेजेंटेशन मेथड है. ऐसे आपको कई न्यूमेरिकल्स में इन फॉर्म में न्यूमेरिकल डाटा दिया रहता है जिसको ऐसे सॉल्व किया जाता है. तो ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि कंसंट्रेशन टर्म, मोलारिटी, नॉर्मलिटी और मोलारिटी क्या होते हैं. अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में हम एक एक को फुल डिटेल में आपको समझाएंगे. मोलारिटी के क्या फॉर्मूलेज हैं, नॉर्मलिटी क्या है, मोलारिटी क्या है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.